മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ കള്ളസാക്ഷി പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അങ്ങോട്ട് കേസെടുക്കുകയാണ്. കടുവയെ പിടിച്ച കടുവാന്ന് കേട്ടില്ലേ? കടുവ, കൃഷിക്കാർ, ദളിതർ, പൗരാവകാശം നടത്താൻ വേണ്ടി ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ, അവരെല്ലാം ഇന്ത്യൻ യുവതയുടെ പ്രതീകമായ കനയ്യകുമാറും വിമാനത്തോടുകൂടി ഞങ്ങൾ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. കേന്ദ്രമായ JNUവിന്റെ ചെയർമാനായിരുന്നു ശ്രീകാവ് കനയ്യ. കനയ്യയുടെ ആ പോരാട്ടക്കാരൻ കനയ്യയും ശ്രീകാവ് ബോസിനെയും വളരെ അഭിമാനവും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും അഭിവാദ്യങ്ങൾ. അധ്യക്ഷ പദവി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി Friends and comrades, first of all I would like to take permission from the great people of Kerala that I can't speak Malayalam and I don't want to impose my mother tongue on you, so please allow me to speak in Hindi or English. Thank you. दोस्तों, this month is very important for us. You know, in coming weeks there are many important days are coming. There will be Good Friday, there will be Easter, and the holy month Ramadan will start. And on 14th April we will celebrate the birth anniversary of founding father of our constitutional democracy, Dr. Baba Saheb Bhimrao Ambedkar. We will celebrate festival of light, Vishu. And the same month we are celebrating the festival of democracy. You will vote on 6th April. When I was coming to Patambi, one of the journalists asked me, you are going to Patambi, what you will speak to the people? I said, I will not speak, I will ask to them. Last time when I was here, I just came out from the jail and many people, they are still in jail. Dozen of student activists, human rights activists, intellectuals, they are in jail. And what is the crime? Crime is they are speaking truth, they are asking question to the government. So I will go to Patambi and ask them. Last time when I was here, I asked them and I told them, please support us, vote us. Please vote to one of my friend, Sagabe Muhammad Mohsen. And they have voted. They have shown their faith on our movement, on our struggle. They have expressed their solidarity to us. So when this election is coming and people will go and vote, I just want to check, I just want to ask them, this person has worked for you or not? Tell me. He has made schools? Tell me yes or no. He had made roads? He made fire station? He made hospitals? So I am here, and this is the example why we need young people in politics, why we need honest people in politics. Because for us, those who believe in people's movement, election is not just to gain the power. For us, election is a movement, election is a struggle to be with people and work for them. और मुझे बहुत खुशी हो रही है, अभी जब मैं पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी घूम रहा था, अच्छी सड़कें बनी हैं, गुड रोड्स। कुछ रोड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है,
तो हम आपसे दोबारा ये कहने के लिए आए हैं कि अगर 5 साल आप हमारे काम से खुश हैं तो एक बार और मौका दीजिए कि हम जो बचा हुआ काम है उसको पूरा कर सकें। इसके साथ साथ यहाँ पे जर्नलिस्ट ने 2 और क्वेश्चन पूछा। एक, उन्होंने कहा कि देयर आर सम कंट्रोवर्सी अबाउट रिलीजन एंड ऑल। हमने उनको कहा कि हम मंदिर के खिलाफ नहीं हैं, हम मस्जिद के भी खिलाफ नहीं हैं, हम गुरुद्वारों के खिलाफ नहीं हैं, हम चर्च के खिलाफ नहीं हैं। वी आर नॉट अगेंस्ट टेम्पल, वी आर नॉट अगेंस्ट मॉस्क, वी आर नॉट अगेंस्ट चर्च, वी आर नॉट अगेंस्ट गुरुद्वारा, बट वी आर प्रो एजुकेशन, प्रो हेल्थ, प्रो रोड्स, प्रो डेवलपमेंट। दिस इज आवर कमिटमेंट। कई बार लोगों को ये लगता है कि ये जो लाल झंडा उठाए लोग हैं ये धर्म विरोधी होते हैं। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि एलडीएफ की गवर्नमेंट पिछले 5 साल में आपके लिए क्या काम की है? आपको पेंशन दिया है, आपके लिए घर बना रही है। ऐसा तो नहीं है कि आपको मंदिर या मस्जिद जाने से रोक रही है। ये प्रोपेगेंडा है। हम रिलीजन के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमारे पास रीजन है। हम सोच सकते हैं, हम सवाल पूछ सकते हैं, हम ये समझ सकते हैं। इसीलिए हम ये सवाल पूछते हैं कि हमारे बच्चों को मेहनत करने के बाद, मजदूरी करने के बाद, परीक्षा पास करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद, मेडिकल करने के बाद नौकरी नहीं है और देश के गृह मंत्री का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना हुआ है। वी हैव रीजन। इसलिए हम सोच सकते हैं कि वाई वी नीड पब्लिक हेल्थ, वाई वी नीड पब्लिक एजुकेशन, वाई वी नीड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वाई वी नीड पब्लिक sector, because we have gone through pandemic. It is still going on. So who has helped us? What has helped us? Public health has helped us. So my question is, democracy is not just for few people of this country. Democracy is our fundamental right, and we salute the great land of Kerala, the land of social reformer and social movements. And I have believed that Kerala has shown the path to the country. There is a 2 kind of model. One model is Gujarat model, which is based on Bargiya fascism, communal hatred, and they are here to serve their friends and loot the public sector and public money. And another model is Kerala model. We are in the power for the people, people's democracy, good health, good education, good roads. So Kerala has to decide, and I have faith on you. Last time you have replied Modi very well, Pomone Modi. This time also you have to play a role of light. When you will celebrate the Bisu, you have to remember one thing. When the darkness is growing, when the hatred is going, Kerala has to spread the light. And I am sure that this time you people will make history. Once upon a time, Comrade Achyuta Menon was the 2-time chief minister. This time LDF will win and Comrade Pinarayi Vijayan will be the 2nd-time chief minister. This is my belief. After this wish and this appeal, I would like to conclude my speech, and I would like to thank my friend Sagabe Muhammad Mohsin, and I would say Sagabe Mohsin Lal Salam and Abiba Dingal to all my friends and comrade. Saga Kale Namaskar, Inqilab Jindabad. You want to say Azadi? You want to get freedom from your problems? So please say loudly. अरे हम क्या चाहते हैं? है हक हमारी, है जान से प्यारी, है हक हमारी। अरे गरीबी से तो भुखमारी से हम लेके रहेंगे।
चुअप्पिन विवादिंगल अरे इनकुलाब जिंदाबाद अरे एलडीएफ जिंदाबाद अरे एलडीएफ जिंदाबाद वोट फॉर एलडीएफ अरे वोट फॉर एलडीएफ शुक्रिया थैंक यू धन्यवाद